of all, let me thank the SMP committee, Asad Firoz, and all the SMP team members who have organized this SMP Audit Skills Enhancement Series. This is an excellent idea, and I believe this will be continued, and our members will take benefit of this excellent initiative. On my topic, let me start by saying that the current environment in which we operate around the world, the whole of auditor committee, there's a significant challenge. In fact, the whole of audit profession has been under spotlight. If we look around, there is activism from regulators, and the regulators now includes a new type of regulator, which is an audit oversight board. Also, the corporate regulator, SSCP in Pakistan and other countries as well. There is an activism on their part. We have been observing new requirements coming in. Every now and then we see changes in the accounting standards. We see changes in the auditing standards. There have been specific circumstances that are arising. There is media coverage. So the overall situation is, if वो जो कहते हैं कि आप लोगों ने अगर एक latest movie है, Everything Everywhere All at Once, इसने 7 Oscar awards किए हैं. So for our community, I would say that this is what is happening. From our standpoint, financial statements, and this is very well acknowledged in the capital market by regulators, by the market. Every stakeholder understands that audit gives credibility to financial statements, and how this credibility is expressed. This is in the form of an audit report which we provide, and how we reach to an audit report. This is a complete process through acceptance of a audit client, going through the planning, execution, completion, issuing an audit report, and finally archiving our audit file, all the work that we have done. So that is the whole process, and I'm sure in this SMP Audit Skills series, you have gone through all the aspects of the audit. For my topic, we are at a position where the audit has been done, and we are into the audit conclusion and the reporting phase. So we will concentrate, we will discuss, I will present what is involved in this process, and at the end we will take questions, whatever question you will have, and I will be happy to answer. So as I said, we start with the point where audit field work has been done. सब काम हो गया हुआ है. Engagement team में आपके audit trainees हैं, आपका managers होंगे, qualified होंगे, और other team members होंगे. So all have done their field work, and there are audit findings. And for those audit findings, I have categorized those in four broad, four broad areas, जिसके अंदर उन audit findings को एक audit engagement team ने conclude करना है कि now how the form of the audit report is going to be. So the first such matter is जिसके अंदर अगर it is a listed entity, and there are certain significant matters which require significant auditor's attention. I'm using the word significant matters along with the significant auditor's attention. So that is a component where we address those through key audit matters, and that is a requirement for listed companies. Then there could be a situation based on the audit findings that we may require to modify our review. And those modifications are dealt by International Standards on Auditing, which I call others.
So ISA 705 addresses the modification of the audit report. Then we have a situation where there are matters which are presented or disclosed in the financial statements. Those in the auditor's judgment are fundamental to the user's understanding. If those are concluded to be fundamental to the user's understandings of the financial statements, then although there is no issue with those matters, but the auditor has taken a view that these are fundamental to the user's understanding. So an emphasis of matter paragraph, which is dealt with under ISA 706 is given. Then there is another concept, and that is of other matter paragraph. That is we use where the matters are not presented in the financial statements, and that is the key. That is the distinguishing factor. That there is a matter which is not appearing or not disclosed, not presented in the financial statements, but the auditor believes that these are fundamental to users' understandings of the audit, auditor's responsibilities, or the audit report. So ये समझ लें कि वो मैटर जो इंक्लूड नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन अगर वो फंडामेंटल यूजर अंडरस्टैंडिंग है, subsequent slides में we are going to cover that. Then we use or add a paragraph, and that is labeled as other matter paragraph. So these are the matters. One specific matter which is going concern, we will cover in a subsequent slide, and that also affects the auditor's report. But broadly, that is under modification of audit opinion, or we add a material uncertainty paragraph. I'll cover that. Going concern in itself is a complete subject, and probably we require another 2 hours for going concern to go into detail. But we will cover that in the context of the audit report. So all of these matters, which I have labeled as significant audit findings, and these are then required to be discussed with those charged with governance. सारे matters जो हैं वो significant enough हैं, and ISA 260 requires that these are required to be disclosed, discussed, communicated with those charged with governance. So that is a complete flow chart, you would say, कि सारे matters जो significant audit findings हैं, how are we going to deal with those? I have simply listed these 8 standards which are relevant when we consider the audit report drafting. And as I said, 260, there are requirements in 260 where we have to report to those charged with governance. I'll cover in the subsequent slide. ISO 700, ये वो हमारी basic function. ये audit report के लिए this is the standard that we follow. 701 is for key audit matters. 705 covers the modification part. 706 is emphasis of matter and other matter paragraph. 710 corresponding figures and comparative financial statements का भी impact है. Our changes in the report are also rising because of if there is any impact due to the corresponding figures as well. 720, this is about the other information. We are required to include that in the auditor's report, other information. So there is a context of other information in the auditor's report as well. Lastly, ISA 230 audit documentation है, इसका relevance है from the date of the audit report. It has relevance. So I'll cover that in one slide as well, right at the end of our presentation. Now, what is the requirement for our communication with those charged with governance? This slide covers the objective, the significant findings from the audit, and the form of communication. ये तीनों जो हैं, and communication with those charged with governance is also a complete subject. I'm relating this in connection with the auditor's report. So as I said initially, that
the matters that are required to be communicated to those charged with governance are the significant matters, those arising from our audit and that are significant and relevant for their function to oversee the financial reporting process. So that is the primary objective that we are required to report, so that at the end of the day, financial statements are the responsibility of the company, and from company it is the board of directors. Board of directors can further separate जो कि listed companies के case में audit committee होता है, but primarily from our perspective, simply speaking, I don't want to go into too much details about the theory behind those charged with governance, but for simplicity's sake, let us take those charged with governance as board of directors in case of companies. So for our communication of significant audit findings, the forum is board of directors. So for board of directors, there's a specific requirement among others, which are listed here, that if there are significant qualitative aspects of the accounting entities, accounting practices, policies, estimates, that is also required. It's not an option, it is required to be communicated with those charged with governance, and there are other matters as well. But the last bullet, which is bold, that is where if there are circumstances that affect the form and content of the audit report, that is where what we are required to communicate with those charged with governance. So I'm just trying to emphasize that before we finalize our audit report, communication with those charged with governance is a requirement. Now, how this communication is to be made. The standard is not mandating that it has to be in writing. This could be in writing, and when we do this in writing, we keep a record, we keep a copy of that communication in our audit documentation file. However, if we are doing that through an oral communication, किसी board of directors meeting के अंदर हम communicate कर रहे हैं verbally, या audit committee के अंदर कहीं communicate कर रहे हैं verbally, then we need to document that how, when, and to whom we have communicated this significant audit finding in relation to the auditor's report, where we are changing or that is affecting the form and content of the auditor's report. Simply, यहाँ भी अगर बात करें, please, as I said, audit that the standard is not mandating that to be in writing, but my advice is कि ये बात में बहुत confusion होती है. So अगर कोई audit report से related matter है, then इसको in writing ही communicate किया जाए. That is an advice. However, this can still be done orally, but you need to make a record of how this has been done. Now, what specific matters that affect the form and content of the auditor report, वो यहाँ list किए हैं. I have already mentioned कि अगर कोई modification है of audit report, then prior to we sign off on those audit reports, those need to be communicated to the board of directors. Material uncertainty related to going concern, if that is the case, then again, we need to communicate this prior to issue of the audit to those charged with governance. Key audit matters का mention किया है, cases of matter paragraph or other matter paragraph वो भी बताया है, and also in relation to the other information that I mentioned, that if there are any uncorrected material misstatement with regard to the other information which are covered under ISO 720, again we are required to communicate with governance board of directors. So these are the matters that we need to communicate. Now, it is important that another matter which needs to be communicated to those charged with governance is about the written representations. I'm taking advantage of this forum to communicate to you that ISO 260 also require कि अगर हमने कोई written representation required की है, तो वो भी हम those charged with governance को meaning board of directors को communicate करें. Sometimes we attach the representation letter along with our cover letter to the audit report and financial statements. उस form में भी होता है.
या हम उसके अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि वी हैव provided this to this level of the management and you can take a copy of that, and this is how we communicate our representation. One additional thing इसके ऊपर कई दफा पास में भी मेरे से सवाल होते हैं, and I always clarify कि if there are uncorrected misstatements which are considered not material for adjustment, then those uncorrected misstatements also form part of the representation letter. It is an attachment that goes with the representation letter, and we need to mention and communicate to those charged with governance that there are uncorrected misstatements which we have concluded those to be immaterial. That is what is required by auditing standards. So just wanted to highlight this. Now, coming to the main form of the audit report, I'm sure you're all aware ISO 700 is the form that is the auditing standard that governs the form and reporting of the audit report. Now, what I have done here is financial statements पे जो audit report है in Pakistan principally जो है वो 3 तरह की financial statements हो सकती है. One which are under the Companies Act, the others जो कि Companies Act के अंदर नहीं है, किसी भी और law के अंदर किसी भी और requirement के through वो obligate हो रही हो, but वो statutory financial statements हो. ट्रस्ट एक्ट के रिलेटेड अगर आप कर रहे हैं तो सर कोई भी और एक्ट है अदर देन कंपनीज एक्ट. और तीसरा जो है दैट इज द स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आईएस 800 के अंदर हम ओपिनियन देते हैं. सो इन आवर प्रेजेंटेशन स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है आईएस 800 वाली दैट वी आर नॉट कवरिंग. वी आर कवरिंग द स्टैट्यूटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो कि प्रिंसिपली कंपनीज एक्ट के अंदर है या कंपनीज एक्ट के अलावा पाकिस्तान के अंदर जो भी लॉज है उसके अंदर हम report कर रहे हैं, but जो कि statutory financial statements है. Now, for Companies Act financial statements, we use the format as provided or as prescribed in the auditor's reporting obligation regulations. So, under the Companies Act, SSCP has notified, has issued, has prescribed auditor's reporting obligation regulations. So, जब भी आप किसी कंपनी के ऊपर जो कि कंपनीज एक्ट के अंदर कवर हुई है अगर रिपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो चीज है वो हमने देखनी है ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन रेगुलेशन से एंड नॉट फ्रॉम आईसा 700 से. ठीक है, ये बिल्कुल क्लियर रखें. जो फॉर्मेट है वो ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन से आता है. राइट, ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन के अंदर सारे फॉर्मेट सब चीज प्रिस्क्राइब्ड है. It is strongly advised कि whenever we use उसका कॉमा फुल स्टॉप भी जो है उसको चेंज ना करें. और अगर कोई ऐसा आपको लगे कि ये एब्सोल्यूट नेसेसरी है इस सिचुएशन के अंदर तो कंसल्ट करें. मेरी एडवाइस नहीं है कि आप उसके कॉमा फुल स्टॉप को भी जो है जो प्रिस्क्राइब्ड चीज होती है वो प्रिस्क्राइब्ड मैनर के अंदर ही यूज करनी चाहिए. देन जो अदर देन कंपनीज एक्ट है सो उसके अंदर टू द बेस्ट ऑफ माय इंफॉर्मेशन no other law prescribe statutory financial statements के लिए कोई audit report, right? So अगर किसी और law के अंदर कोई audit report prescribed है तो of course we will follow that report. However, as I said कि क्योंकि नहीं है to the best of my information, institute के अंदर जो ATRs हैं उसके अंदर reports के formats जो है वो prescribed हुए हैं. So we need to use the form of reports as given in the ATR 17. What is the importance of ATR 17? Let me clarify कि ATR 17 ये auditing technical releases हैं और ये इंस्टीट्यूट के काउंसिल के डायरेक्टिव के कॉन्टेक्स्ट में इशू हुई भी है. So hence these become mandatory on the auditors. So by virtue of professional obligations हमारे ये otherwise ये professional misconduct हो जाएगा. So ATR 17 is mandatory for those situations where other than Companies Act है या किसी और law के अंदर वो report prescribed नहीं है. So I wanted to clarify the difference between the two. अच्छा, ATR 17 की जो reports हैं वो ISO 700 से बनी हुई है, right? So उसके पीछे जो ऑडिटिंग स्टैंडर्ड है वो आइजा है और वो कंप्लीटली कंप्लायंस है.
जो ये सवाल होता है कि जी जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशंस हैं उसमें और जो आईजा 700 है उसमें फर्क क्या है। सो टेक्निकली स्पीकिंग कुछ डिफरेंसेस हैं, बट आई एम फेयरली कंफर्टेबल इन मेकिंग दिस स्टेटमेंट के जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है वो इन कंप्लीट कंप्लायंस विद आईजा 700 है। ठीक है। सो ऐसा नहीं है कि वो आईजा 700 के बाहर है। कुछ वर्ड्स वगैरह का, कुछ चीजों का फर्क है, दैट आई हाईलाइट, बट वो भी आईजा 700 के मुताबिक ही ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है और कंप्लीटली इन कंप्लायंस है। जो डिफरेंट वर्डिंग्स हैं जो कि हम वहाँ इलस्ट्रेटिव में देखते हैं, एंड द वर्डिंग दैट वी सी इन द ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन जिसको हम यूज करते हैं स्टेटरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंपनीज एक्ट के लिए यूज करने के लिए, उसमें कुछ वर्ड्स का फर्क है। सो उन सेंटेंसेस को यहाँ एक्सप्लेन किया है। So, for example, the first one is that we state that we have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of the audit. This sentence is not appearing in the ISA 700 के फॉर्मेट के अंदर जब हम वहां जाके देखते हैं। इसी तरीके से आप ये सेकंड देखें, इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ आवर इंफॉर्मेशन एंड अकॉर्डिंग टू द एक्सप्लेनेशन गिवन टू अस, ये भी नहीं है। In the manner so required and respectively give a true and fair view of the state of the company's affairs as at. So ये जो sentences हैं ये इस तरीके से इन words के साथ 700 में नहीं है, बट ये words जो हैं वो इस वजह से आ रहे हैं कि ये जो body of the law है यानी कंपनीज एक्ट का, अगर हम प्रोविजन के अंदर जाएंगे तो वहां ये स्पेसिफिकली नरेटेड है, स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ये चीजें स्टेट करनी है। सो दैट इज द रीजन व्हाई एसएससीपी फेल्ट कंपेल्ड के जो आईजा 700 का डायरेक्ट फॉर्मेट है उसको यूज किया जाए। इस वजह से ये कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन दीज additional sentences or different wordings are not in non-compliance with the ISA 700. So कोई ISA 700 की non-compliance इन चीजों की वजह से नहीं होती। Then we are all aware that there is a separate section जब हम audit report issue कर रहे होते हैं Companies Act के अंदर, which is labeled as report on other legal and regulatory requirements. So ये जो पार्ट है ये भी आईजा 700 में क्लियरली लिखा हुआ है कि ऑडिट रिपोर्ट के दो पार्ट हो सकते हैं। वन इज रिपोर्ट ऑन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स and then report on other legal and regulatory requirements. So this is very well acknowledged under the ISA 700 as well, that there could be a separate heading under which other legal and regulatory requirements can be prescribed by your respective regulators. So yeah, ISA 700 भी इस चीज को acknowledge करता है. So these are the few matters जो के हैं, and there is a widespread practice around the world. Many jurisdictions, the corporate regulators have prescribed such additional requirements to be part of the audit report, other legal regulatory requirements. So accordingly इसकी precedence भी है और standard भी करता है. So there is no issues with regard to non-compliance with the ISA 700. However, when we go little deep and see what exactly is required as those other legal and regulatory requirements, there I would say कि ये exactly वो नहीं है जो कि दुनिया में practice होते हैं. The institute position has been has represented, has written many times to SSCP, and there is a disagreement between the content of these other legal and regulatory requirements, but SSCP is of the firm position that these need to be included under these heads. So, for example, if you see investments made, expenditure incurred, and guarantees extended during the year were for the purpose of the company's business. Now, this statement is unreserved. इसके अंदर कहीं मटेरियलिटी नहीं आ रही, इसके अंदर कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं है कि जी इससे क्या, इसकी बहुत सारी इंटरप्रिटेशन और डिफरेंस ऑफ व्यूज के अंदर आ सकते हैं। मैंने अभी तक कहीं भी किसी भी और जुरिस्डिक्शन के अंदर
ये जो सी का स्पेसिफिक जो सेंटेंस इस तरह से लिखा हुआ है ये इस तरीके से नहीं आ रहा है। इंडिया के अंदर बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, ये तो सिर्फ 4 रिक्वायरमेंट्स देख रहे हैं, बट इंडिया के अंदर प्रॉब्लली मोर देन 14-15 requirements हैं that they are required to report as an additional matters separately. So इसकी precedence है, but इस manner के अंदर नहीं है. So but for your understanding, what I'm saying is that the format is in accordance with ISO 700. These are the requirements that are mandated. So for us to report, जो जिस चीज का ख्याल रखना है वो ये कि for each of these items we must have working papers to support how we are going to defend our statements in the audit report, जो ये prescribed है जब हम इनको देते हैं. So इसके पीछे इसका वर्क पेपर जरूर बनाएं, क्योंकि ये किसी ऑडिटिंग स्टैंडर्ड की स्पेसिफिक चीज से नहीं आ रहा कि ज़कात डिडक्टेबल है, इसका एक प्रॉपर पेपर और वेरिफिकेशन होनी चाहिए. इन्वेस्टमेंट मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड, गारंटीज एक्सटेंडेड, इसका भी जो है वर्क पेपर के अंदर एडिशनल जो है वो आपको वर्क पेपर्स इसके सपोर्ट के लिए ड्यूरिंग आवर वेरिफिकेशन, वाउचिंग ऑफ एक्सपेंडिचर, सब जगह इसकी कॉन्टेक्स्ट और इसका documentation we must maintain. Right. So I also mentioned about the going concern standard, and ISO 570 जो है वो cover करता है. And when you go through the ISO 570, there are certain illustrative audit reports as well. So other than ISO 700 series के अंदर जो audit reports की illustration दी हुई है, ISO 570 के अंदर भी going concern के context में auditors report जो है वो prescribed है. So ISO 570 conceives two situations, where one is that जो going concern assumption है वो appropriate है, right? But a material uncertainty exists, and other situation is where use of going concern based on accounting is inappropriate. Right, so जो financial statements बने हैं उसके अंदर going concern assumption जो है was considered appropriate, but material uncertainty has been concluded to exist. Other situation is where going concern का जो assumption है वो company ने जो है वो तो financial statements बनाए हैं, but the auditor's conclusion is that the use of going concern basis of accounting is inappropriate. So there will be impact on the auditor report. So before I cover the audit report part, I just wanted to highlight that going concern assumption है क्या. Going concern assumption के ऊपर इंस्टीट्यूट ने from auditor standpoint जो है वो एक पूरी डॉक्यूमेंट भी जो है वो इशू किया हुआ है, एंड जितने भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं बहुत ही सिग्निफिकेंट डिटेल के अंदर गोइंग कंसर्न की ऑडिट रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में एक्सप्लेनेशन वहाँ मौजूद है. अगर आपने उसको रीड नहीं किया हुआ तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू मस्ट हैव दैट कॉपी. उसको वेबसाइट से इंस्टीट्यूट के ले लीजिए और उसको जरूर अपने सामने रखिए, उसको स्टडी कीजिए, अपनी टीम्स को, अपने ट्रेनीज को, अपने अदर स्टाफ मेंबर्स को जरूर वो दीजिए. That is an excellent document available for you. But from the accounting standpoint, यानी preparation of financial statement standpoint, जिसको हम ये discuss कर रहे हैं कि जहाँ कोई concern assumption appropriate है या नहीं है, उस context के अंदर कोई separate accounting standard नहीं है, right? So going concern assumption की जो discussion है वो सिर्फ IAS 1 के अंदर दी हुई है. IAS 1 का पैराग्राफ 25 है, उसको 25 उसको आप रीड करेंगे और उसके कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा 119, 122 जो पैराग्राफ्स हैं वहाँ उसके बारे में जिक्र किया हुआ है. सो मैं तो अभी आई एम कवरिंग द ऑडिटर्स रिपोर्ट पार्ट, बट इन ऑर्डर to evaluate, in order to understand the going concern basis accounting concept, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर बहुत एक्सटेंसिवली ये चीजें डिस्कस नहीं है,
बट एज आई सेड IS1 को वहां से आपने इसकी गाइडेंस ले ली है। एक इशू जो आता है रिलेटेड दैट इज वेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर कंक्लूडेड और द कंपनी हैज कंक्लूडेड दैट द गोइंग कंसर्न बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो है वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए नहीं है, तो फिर अकाउंटिंग फ्रेमवर्क कौन सा यूज करना है। तो प्रेजेंटली जो है वो इंस्टीट्यूट ने उसके लिए गाइडलाइंस इशू की हुई है व्हिच हैज बिकम द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड नाउ। सब लोग उसी को फॉलो करते हैं। However, now those guidelines are being converted into a formal accounting standard, and वो accounting standard public comments वगैरह के लिए सबके लिए इशू भी हुआ था, और उसका करंट स्टेटस ये है कि वो SSCP के पास सबमिट किया गया है कि उसकी फिर नोटिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट किया जाए, दैट इज फॉर accounts which are prepared under non-going concern assumption. I'm just giving and updating. So now we have a situation where use of going concern basis of accounting is appropriate. Accounts are prepared on that basis, but the material uncertainty exists. So we have to see two things. One, that whether adequate disclosure of this material uncertainty have been made in the financial statement. वो जो material uncertainty cause कर रही है, उसका adequate disclosure होना is a requirement. If that is not done, then हम जो है वो unmodified opinion यानी आपने अगर adequately disclosed है, then we are required to include a material uncertainty paragraph, material uncertainty relating to going concern paragraph. That is a requirement. So we have to ensure that there is an adequate disclosure. First, there is a material uncertainty. If there is a material uncertainty, the financial statement need to disclose that. If the disclosure is adequate in the opinion of the auditor, then the only requirement is to give an additional paragraph under the heading material uncertainty relating to going concern, where you make reference to this paragraph and make statement that our audit opinion is unmodified. So that is the situation. However, if the adequate disclosure of material uncertainty is not made in the financial statements, in the auditor's judgment, कि यहाँ क्लैरिटी के साथ ये जो चीजें रिक्वायर्ड है that has not been explained in the financial statement, then we are required to express a qualified or adverse opinion depending upon how the severe or जो उसका context है. For that we need to take guidance from either 7 or 5. The other situation, as I said, the use of going concern basis of accounting is inappropriate. The management has still used the going concern basis of accounting. Then we need to express an adverse opinion. So from going concern standpoint, if the material uncertainty exists, clearly आपको एक additional paragraph add करना है, material uncertainty related to going concern. अगर disclosure सही नहीं है, तो adverse या qualified opinion है, 705 की guidance लिखनी है. However, अगर going concern पे accounts बने हैं, लेकिन going concern basis of accounting inappropriate है, तो adverse opinion होगा auditor. Right. Now, key audit matters. So key audit matters are only mandated for listed entities. ये मैंने start में भी clarify किया था. So I'm again emphasizing the key audit matters are in the context of listed companies. Now, what is a key audit matter? ये एक question है. Although now some years have already been passed, people are more educated, aware of the requirement. But I think it is important that we should continue to explain these concepts. So what is a key audit matter? Now, I'm very specifically reading this so that you can really focus on the requirement. So key audit matters are those matters that in the auditor's professional judgment. So what is important to note here is that it is going to be auditor's professional judgment. There is no prescription. There is no specific thing that यही की audit matter है. Auditors ने decide करना है कि उसकी professional judgment के अंदर कौन सा matter की audit matter बन सकता है. उसके लिए जो principal guidance है वो हम follow करते हैं, but note करें
that this is auditor's professional judgment. So those matters that in the auditor's professional judgment were of most significance in the audit of the financial statement. So we stop here. Were of most significant. These are not significant matters. These are most significant matters. This is what we need to understand. Higher significant audit matter will not be categorized as key audit matters. Out of the significant audit matters, the most significant will be treated as key audit matter. So I emphasize on that. Now, the last part. So one of most significance in the audit of the financial statements of the current period. Please understand, this has got to be for the current period. इस period के लिए क्या significant है? Prior periods का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. इस साल के लिए जिस period को audit cover कर रहा है, उसके लिए वो most significant है. ठीक है? So through the definition, three important things to note. One is that it is in the auditor's professional judgment, most significant, and it is for the current year, current period, right? Now, जो most significant matters हैं जिनका मैंने बात किया है, most significant matters, वो क्या है और उनको किस तरीके से हमने देखना है, ये बहुत दफा मेरे से सवाल होता है. So for that I always give example कि there are three buckets बना लें जिसके अंदर हमने देखना है. Always you have to think most significant matters in the context of these three buckets. और आपने ये देखना है कि in your audit जो most significant matters थे जिससे significant auditor attention लिया है, those have to be looked at from the point of how we determine a key audit matter. So what are these three buckets? Number one, got to be a high assessed risk, यानी जिसका high risk है, area of higher risk है, और जिसके अंदर significant risk identify किया हुआ है, और उसने most significance ले ली है, that is, so higher risk, assessed risk, risky area could be your key audit matter. वो second is वो एरिया जहां significant auditor judgment है. Significant audit judgment जहां estimates involved होते हैं. For example, आपने कहीं valuation की है तो उसके अंदर assumptions वगैरह involved होंगे. So significant auditor judgment जो है वो areas आपने देखने हैं कि उसमें से कौन सा most significant matter है जो which has made significant auditor attention for the current period. वो second आपका वो है. So higher risk area, simply speaking, significant auditor judgment matter. Second bucket है हमारा. Third bucket हमारा है जिसके अंदर अगर कोई significant event या कोई significant transaction हो गई हुई है जिसने आपको यदि during the period हुई है और वो इम्पैक्ट कर रहा है, उसका ऑडिट के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, कोई एक्विजिशन हो गई हुई है, कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक इवेंट हो गया हुआ है जो कि आप ऑडिट कर रहे हैं, उसके कॉन्टेक्स्ट में उसका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट हुआ है और अकॉर्डिंगली वो लीडिंग अप टू द ऑडिट है. सो वो आपका थर्ड आपका बकेट है. तो तीन बकेट है, हायर रिस्क, सिग्निफिकेंट जजमेंट और सिग्निफिकेंट इवेंट और ट्रांजैक्शन. इन तीन में आपने उसको कंपार्टमेंटलाइज करना है. वो मैटर जो कि सिग्निफिकेंट मैटर्स थे वो इन कॉन्टेक्स्ट में आपने अंडरस्टैंड करके और इसमें से पिक करना है कि वो की ऑडिट मैटर है और अकॉर्डिंगली जो की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग है उसके अंदर भी ये इसी तरीके से कि व्हाई हैव यू कंसीडर्ड दिस एज अ की ऑडिट मैटर, वो इन्हीं कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर लिखा भी जाता है. I've given these few examples. ये I'm sure कि ये जो SMP टीम है वो आप लोगों से ये पूरी प्रेजेंटेशन भी शेयर हो जाएगी. So इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है. इसके अंदर पूरा क्यों की ऑडिट मैटर है उसको डिफाइन हुआ है.
So when we come and start drafting the key audit matter, तो ये दो कॉलम में हो रहा है, दो पार्ट में हो रहा है, and this is how ये prescribed फॉर्मेट है कंपनीज एक्ट का लिस्टेड कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट के अंदर. सो इसी तरह से हमने टू कॉलमनर लेकर इसको चलना है. इंटरनेशनली ये ऊपर नीचे भी आ सकता है, बट यहाँ क्लियरली जो फॉर्मेट है और कंसिस्टेंसी के लिए इसको दो कॉलम के अंदर किया गया है. So first column explains what is the key audit matter, and the second column states how the matter was addressed in our audit. So when we come to the key audit matter explain, अगर आप इसमें नोट करेंगे तो इसमें आप सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट का रेफरेंस करते हैं. You can use this through a separate heading. You can include this in the body of the जो आप की ऑडिट मैटर ड्राफ्ट कर रहे हैं उसके अंदर भी ये लिखा जा सकता है, किया जा सकता है. बट जो वाइड स्प्रेड प्रैक्टिस है इसका पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर ये इसको किस रिलेशन से है उसका मैटर जो है आप एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नोट को रख सकते हैं. बाकी आपने इसके अंदर बताया है कि जी ये डिटेल क्या है और ये इस पर्टिकुलर मैटर के अंदर हायर रिस्क एरिया था. वो हायर रिस्क एरिया क्यों था वो उसकी एक्सप्लेनेशन है, एंड उसको स्पेसिफिकली स्टेट किया है कि फॉर दिस रीजन we have taken this as a key audit matter. Now, how the matter was addressed in our audit? इसके अंदर आपने simply speaking यूँ समझ लें कि आपने अपना जो audit program है उसको आपने यहाँ लेकर आना है. बट audit program के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा आप sampling specific चीजें आती हैं, तो ये आपका वो audit procedures क्या हैं उनको आप फिर यहाँ list कर रहे होते हैं. So if you look at it, तो यहाँ पूरा जो है जो आपका key audit matter है वो for a reader there should be a clear communication that auditor has comprehensively covered the key audit matter, the risk or the significant estimate or significant judgment matter जो आपने key audit matter बनाया है. How have you ensured that key audit matter how you have satisfied yourself that there are no findings attached to this की ऑडिट मैटर. एक चीज में अगेन बहुत ही क्लैरिटी के साथ ये स्टेटमेंट दे दूं कि समथिंग which is included as a key audit matter is not equivalent to qualification. It is not equivalent to matter emphasis. It is not equivalent to other matter. ये वो मैटर है जिससे आप एज एन ऑडिटर completely agree करते हैं. It means that there are no observation, there are no negative observation with regard to such matter. The auditor is in agreement because ये हमने key audit matter लिया है. It does not mean that there is an exception that we are reporting, and the way it should be drafted, it should be in a manner where simply we are stating certain facts and how we have verified. So this cannot be taken as an alternate to either a qualification or a matter emphasis or another matter paragraph. The matters which are the significant audited matters and which have become most significant. And as I said, there are three buckets under which we have to disclose. One is the higher risk, the second is the significant judgment, and the third is the significant transaction or an equivalent. But in that context, lena hai, not as an equivalent to any other qualification. ये बड़ा important है. This is another example कि इसके अंदर जो है वो significant judgment or assumptions वाला है. So that is listed, and there are certain procedures you can take guidance from here. ये during the year जो है वो IFRS 16 की अगर adoption हुई थी, so उस context में ये draft हुआ हुआ है. So you can have a look at it कि इसको किस तरीके से आपने देखना है, draft करना है. These are actually now जो important चीज I was explaining कि key audit matters को हमने इस तरीके से नहीं देखना कि ये किसी भी तौर पर ये किसी और चीज का equivalent है. These are simply speaking significant attention matters हैं जो ऑडिटर ने अपने लिए नोट किए हैं, ऑडिटर के अपने प्रोफेशनल जजमेंट में है. सो गोइंग कंसर्न का मैटर अगर किसी भी कंपनी के ऑडिट में राइज आउट हो गया हुआ है,
by the very nature, going concern becomes a significant audit matter. However, going concern के लिए जो audit report है, उसके लिए I have already explained कि या वो 570 में कवर होगा या 705 में जाएगा। 570 के अंदर material uncertainty related to going concern आ जाता है, और अगर उस पर कोई हमारा ऑब्जेक्शन है, कोई हमारा डिसएग्रीमेंट है, तो वो फिर मॉडिफिकेशन की तरफ चला जाता है। उसको आपने की ऑडिट मैटर के अंदर उसको नहीं लेना। Some very important matters that we must take note of. 701 को यानी की ऑडिट मैटर्स को ड्राफ्ट करते हुए अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि वी एज एन ऑडिटर कैन नॉट बी द सोर्स ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं कोई जिक्र नहीं है, किसी डायरेक्टर रिपोर्ट में किसी चीज का जिक्र नहीं है, यानी उसका कहीं कोई पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं है फ्रॉम अ कंपनी स्टैंड पॉइंट, एंड ऑडिटर जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन उसके अंदर दे रहा है जो कि और कहीं से नहीं आ रही, बट ऑडिटर हैज बिकम द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। So that is something that is not to be done, और auditor should not be a source of the original information, और उसका disclosure और वो सारी चीजें जो है वो financial statement में डालनी चाहिए। But there could be such situation, for example, कि एक लिस्टेड कंपनी ने अपना पूरा ईआरपी सिस्टम जो है वो चेंज किया है। सो ईआरपी सिस्टम जो है वो तो अब कहीं से नहीं आएगा, वो तो उसकी पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं होगा, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मेंशन नहीं हुआ होगा। सो टू दैट एक्सटेंट तो आप बता सकते हैं कि ईआरपी की जो इम्प्लीमेंटेशन थी और उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रांजिशन था, उसके कोड वगैरह वगैरह जो भी आप ईआरपी से रिलेटेड सेंसिटिविटीज होती हैं हमारे ऑडिट के अंदर, वो तो आप मेंशन कर सकते हैं कि दोज बिकम एन हायर रिस्क एरिया एंड हेंस टेकन एज अ की ऑडिट मैटर। बट फॉर अदर मैटर्स जो हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टिपिकली कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में आ रहे हैं, उसके लिए ओरिजिनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमने की ऑडिट मैटर की ड्राफ्टिंग के अंदर नहीं करना है। इसकी स्पेशली कवर मतलब ध्यान रखना है। किसी भी रिपोर्टिंग में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन के दिस शुड नॉट बी टेकन एज कि जी हमने कोई अप्रोप्रिएटली इसको जो है ना वो कवर नहीं किया है, जो प्रोसीजर्स हमारे हो वो कुछ इस तरह से ना आ रहे हो कि जी इसमें कोई झोल रह गया हुआ है, या हम कोई व्हील्ड वे के अंदर वी आर रेजिंग सम ऑब्जेक्शन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दिस इज नॉट हाउ इट शुड बी drafted and included in the auditor's report. Make special note of that. जो भी मैटर हो वो हर कंपनी में एक ही तरीके की स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज करके जनरलाइज उसको यूज नहीं होना चाहिए कि ऑडिट मैटर इज फॉर अ स्पेसिफिक कंपनी एंड शुड बी done or drafted in those specific circumstances and those specific manner relevant to the financial statement जिसको हम cover कर रहे हैं। Also, it is very important to note that when we include the key audit matter, it does not mean that we are specifically clearing that very specific matter. Audit report is always taken as a whole. It is on the whole of the financial statement, and we do not express opinion on any specific separate element of the financial statement. So we must not draft our key audit matter in a manner where it is taken as that we are clearing a specific element जो है हमने deferred tax को clear किया है, हम लोगों ने हमने किसी contingency को clear किया है। No, we should not be drafting this because our audit opinion is taken as a whole. जो अगेन एक और इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई ऐसा मैटर है जो कि लॉ ने पब्लिक डिस्क्लोजर से मना किया हुआ है और वो हम की ऑडिट मैटर के तौर पर लेकर आए, तो वो भी नहीं होना। बट पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कोई सिचुएशन आएगी, बट चूंकि ये स्टैंडर्ड के अंदर है, सो दैट इज व्हाई आई हैव हाइलाइटेड दिस। नाउ मूविंग ऑन टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन। जो क्वालिफाइड ओपिनियन जिसको हम कॉमनली यूज करते हैं, so for qualification for modification of the opinion, ये एक बड़ा सिंपल सा चार्ट है। इसको अगर आप लोग नोट करें, इसको याद भी कर लें, जब भी अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर जब आपका कोई ऐसा इशू आ रहा हो
तो इसको सामने रख लें, बड़ी ही क्लैरिटी हो जाएगी आपको कि आपने किस सिचुएशन में आपने क्वालिफाइड देना है, किस सिचुएशन में एडवर्स ओपिनियन देना है और किस सिचुएशन में आपने डिस्क्लेमर देना है। बड़ा सिंपल सा चार्ट है। सो व्हाट इट स्टेट्स इज कि अगर based on your audit you have concluded that the financial statements are materially stated, क्योंकि immaterial के ऊपर तो हम क्वालिफाई नहीं करते हैं। Now, if the financial statements are materially misstated, we have concluded, the audit team has concluded, audit engagement partner has concluded, then we have to see कि उसका दो चीजों में आपने कॉन्टेक्स्ट में देखना है। वन इज कि क्या ये परवेसिव है, परवेसिवनेस यानी मटीरियलिटी एंड परवेसिवनेस। स्टार्ट कहां से है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने ये देखा है कि जी इन्वेंट्री की वैल्यूएशन जो है वो गलत हुई है। वी हैव कंक्लूडेड कि ये IAS 2 के मुताबिक जो है ये नहीं हुई है। So we have concluded कि valuation गलत है। Financial statements are materially misstated. Now the next question is that we have to determine whether this comes under the definition of pervasiveness. Pervasiveness की जो definition है कि वो इतना significant है कि वो आपके पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक बहुत बड़ा 80% इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इम्पैक्ट हो रही है। तो ये आपका एक समटाइम्स साइज से देखा जाए, समटाइम्स ये इतने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइन आइटम्स को अफेक्ट कर रहा है कि पूरे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके ऊपर एक ओवरवेलमिंग इम्पैक्ट है। तो परवेसिवनेस को जो है वो आपने डिटरमिन करना है। फर्स्ट थिंग इज कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटीरियली मिसस्टेटेड, वी हैव कंक्लूडेड। द सेकंड थिंग इज वी हैव टू सी वेदर द मैटर इज ऑफ परवेसिव इन नेचर और नॉट। If it is not pervasive, then qualified opinion होगा, except for opinion होगा। अगर pervasive है, then वो adverse opinion होगा कि ये do not represent an opinion, right? So that is the first. Then there could be a situation where there is restriction on scope है, inability to obtain sufficient appropriate audit evidence है। तो ये हमारा स्कोप लिमिटेशन उर्फ आम में जो नॉर्मली कॉमनली स्कोप लिमिटेशन आ गई है। सो इफ दिस इज अ स्कोप लिमिटेशन, जिसका जो टेक्निकल वर्ड है कि इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, दिस कुड बी ड्रिवन फ्रॉम सर्कमस्टांसेस, दिस कुड बी ड्रिवन फ्रॉम मैनेजमेंट की वजह से कोई ऐसी चीज आ गई है। सो यू नीड टू डिटरमिन जो आपने जो मैटर अराइज हो रहा है। फर्स्ट मैंने ये कहा कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मटेरियली मिसस्टेटेड। सेकंड इज कि देयर इज स्कोप लिमिटेशन and there is inability to obtain sufficient appropriate audit evidence supporting your audit opinion. Then again, as I said, the pervasiveness का जो principle है, that is what you need to look at. So if it is pervasive, we go for disclaimer of opinion. If it is not pervasive, then the qualified opinion is to be given, जो कि except for है, इसकी जो wording है वो differently translated होती है from the first matter है materially stated की। इसमें जो है वो वर्ड पॉसिबल का दिया जाता है फॉर द पॉसिबल इफेक्ट। तो उसका जरा ख्याल रखें, इसकी जो ओपिनियन की ड्राफ्टिंग है वो उसमें फर्क आएगा केस 1 और केस 2 के अंदर। एडवर्स ओपिनियन पहले केस में है जो मैंने बताया कि वो परवेसिव है, फाइनेंशियल स्टेटेड है। दूसरे केस के अंदर अगर परवेसिव है तो डिस्क्लेमर ओपिनियन है कि हम ओपिनियन वी डू नॉट एक्सप्रेस एन ओपिनियन। ये बड़ा सिंपल सा चार्ट है, इसको अपने सामने रखेंगे, इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, इंशाल्लाह never you will be there will never be an issue about your decision on what will be the form of the audit opinion when you are modifying. Now थोड़ा सा प्रोसीजरली जो है वो भी इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, हाउ वी डील विद 705। सो इन 705 का अगर मैटर हमारे पास मॉडिफिकेशन का आ गया हुआ है, it could be an issue with the appropriateness of the selected accounting policies, it could be the application of the selected accounting policies, or there could be an issue about the disclosure के लिए वो inappropriate है, full नहीं है, या we have concluded that there is material misstatements with regard to the disclosure as well.
So when this material misstatement has been identified, the first case that we discussed, so how you deal with it. So in order to deal with it is कि ऐसा नहीं करना है कि डायरेक्टली रिपोर्ट बनानी है, साइन करनी है और कंपनी को इशू कर देनी है. नो, वी हैव टू, एज शुरू में ही मैंने एक्सप्लेन किया था, you have to communicate with those charged with governments and try and resolve the matter. Sometime management resist कर रही होती है, sometime management जो है वो उनका अपना कोई बोनस रिलेटेड इशू हो सकता है, कोई भी और परफॉर्मेंस रिलेटेड इशू हो सकता है. दे मे बी रेजिस्टिंग और पोजीशन ऐसी आ जाती है कि वो एक तरह का डेडलॉक आ जाता है. बट as I said, the requirement is that you go to those charged with governance, board of directors के पास जाएं, communicate करें, and in my practical experience, what I have seen is कि more than 90% cases के अंदर you are able to resolve the matter. और बहुत limited situation होती है जहाँ even board of directors जो है वो आपकी इस matter को resolve ना कर सके. However, if the matter remains unresolved, as I have explained, simply speaking, अगर pervasive है तो adverse कर दें, अगर pervasive नहीं है, you go for a qualified. If this is a matter of scope limitation, unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, again, first principle is try and resolve it with those charged with governance, board of directors के साथ इसको resolve करने की कोशिश करें. And I remember एक केस के अंदर बहुत कम होता है कि आप इस तरीके से एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर मैनेजमेंट को एक तरफ करके और यू स्टार्ट कम्युनिकेटेड डायरेक्टली विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. और लिस्टेड कंपनी के केस में दिस इज क्वाइट एन एक्सेप्शन, बट आई हैव डन दैट इन माय प्रोफेशनल करियर. और मैंने दो स्टार विद गवर्नेंस के बाद किया. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इवन जस्ट अप्रोचिंग देम became a significant matter. पूरे attentive हो गए. The level of alertness, the level of sensitivity was significant high. और ये scope limitation का एक फायर की वजह से कोई केस था, तो रिकॉर्ड के डिस्ट्रक्शन वगैरह का. तो जब वहां अप्रोच किया तो जो लेवल ऑफ सपोर्ट मैनेजमेंट और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस का वो सिग्निफिकेंट फर्क था. And the way they responded, उसको हमने resolve किया. So what I'm highlighting is that if there is such matter, board of directors is the forum to go to if there is a deadlock with the management. So if the matter remains unresolved, जो guidance है standard की, scope limitation की वजह से the standard allows withdrawal from the engagement. ये important है. However, if the withdrawal is not possible, then of course जो पहले मैंने explain किया है कि permissiveness को देखते हुए qualified या disclaimer of opinion जो है वो आपने देना है. अच्छा, withdrawal from the engagement is possible. और दुनिया में jurisdictions हैं जहाँ withdrawal जो है वो legally मना होती है. So if that is the case, तो वो अलग डील होता है. आपने सिंपली आके जो क्वालिफाइड ओपिनियन है उसको करना है. और जो विड्रॉल ना होने के जो रीजंस हैं वो फिर अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर देख सकते हैं, वहां चले जाएंगे. लेकिन विड्रॉल फ्रॉम द एंगेजमेंट इज एन एक्सट्रीम स्टेप. This is allowed by the standard. This provision is there, but take this as an extreme measure where you are withdrawing from an engagement. Now, ISO 706. This is about मैंने शुरू में explain किया कि emphasis of matter अगर है और other matter paragraph है तो उसमें cover होगा. Now, emphasis of matter paragraph को पहले cover करते हैं. So, emphasis of matter paragraph takes into account that you are fully satisfied with the matter. You do not have any difference of opinion with the management. There is no scope limitation. The matter has been appropriately disclosed, appropriately presented in the financial statement. You are in agreement with the treatment of the matter. So there is no exception, right? I am emphasizing an emphasis of matter paragraph is included for a matter
where the auditor has no issue with the matter, right? But the matter is of so significance, is of the fundamental to the user's understanding. And again, this is in the auditor's judgment, it is of such importance that it is fundamental to the user's understandings of the financial statements. In an auditor's professional judgment, आपने ये decide किया है कि जी matter सब ठीक है, I am in agreement, I agree that the disclosures have been properly made, the treatment has been proper. However, the matter is of such significance, which is fundamental to the user's understanding. In that case, you can include an emphasis of matter paragraph. There is a separate heading emphasis of matter, and then you link it with the respective note where that fundamental matter has been explained in the financial statement, and you make a statement that this is our audit opinion is not modified on the matter. In my professional career, and the guidance in our firm has been that there should not be a widespread use of MSO matter. So this is used in exceptional circumstances. It should not be a widespread situation कि अच्छा जी जरा भी important matter देखा तो हम उसको जो है वो एक attention to draw कर देना. So this is not a proper behavior. Emphasis of matter paragraph should be used selectively and on matters which are really exceptional, and very few matters कुछ guidance जो है वो standard ने दी है, इसमें list भी की हुई है. मैं अभी इसको और detail के अंदर I'm not going into that detail, but I'm just trying to give you the message that the widespread use is discouraged. However, if you feel in your professional judgment this is a fundamental to the understanding of the financial statements, then yes, you can include an emphasis of matter which is not equivalent to qualification. Also, this is not a substitute to key audit matter. कि अच्छा जी key audit matter नहीं दिया है तो emphasis of matter दे दे. वो एक अलग पूरा concept है key audit matter का. It is also not equivalent to modification. Modification of opinion is a disagreement. वो एक separate है. 706 emphasis of matter is where there is agreement on the matters. However, it is of such significance, hence the auditor in its own professional judgment has decided to include, and the guidance is, based on my professional career in our firm, the widespread use is discouraged. Other matter paragraph. Other matter paragraph के ऊपर I have seen even कई senior members का मेरे साथ debate discussion हुआ है, और मैंने देखा है कि उसके अंदर भी काफी misunderstanding जो है वो इसके अंदर रहती है. So let me make a statement very, very clear that other matter paragraph is not to be used for matters which are already in the financial. यानी इसका पहला जो criteria, जो पहली चीज है, first thing that you need to understand is that this is something which is not disclosed anywhere in the financial statement. इसमें financial statement में कहीं भी इसका कोई presentation discuss नहीं है. ये पहली चीज है, ठीक है. So other matter paragraph उसके लिए use ही नहीं हो सकता. उसके लिए आपने emphasis of matter को जाना है. So this is something which is not in the financial statement. पहली चीज, right? और ये वो मैटर है जहां आपने ये देखना है कि अगेन मैंने शुरू में एक्सप्लेन भी किया था कि ये फंडामेंटल टू द ऑडिट, fundamental to the understanding of the audit, fundamental to the understanding of the auditor's responsibility, or fundamental to the auditor's overall financial statement की understanding के लिए है, but not something which is part of the financial statement. So what could be those matters? जो most commonly use होता है कि previous year जो है वो कोई दूसरा auditor था. So ये वो मैटर है जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आ रहा, और ऑडिटर जो है वो प्रीवियस ऑडिटर कोई और था, तो वो आप उसमें अदर मैटर पैराग्राफ की हेडिंग के अंदर देन आप दे सकते हैं. देयर कुड बी सिचुएशन वेयर प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड नहीं है, तो वो भी जो है वो आपने ऑडिटर यानी ऑडिटर कैन डिसाइड, और ऑडिटर जो है वो अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर दे सकता है.
एक और इसके अंदर दिया हुआ है कि ये अगर कोई रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज है, रिपोर्टिंग ऑन मोर देन वन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, और वेयर द ऑडिटर इज अनेबल टू विथड्रॉ, ये मैंने भी आपको एक्सप्लेन भी किया है। बट इन जो प्रैक्टिकली स्पीकिंग जो मोस्ट सिचुएशंस आती हैं वो आती है जहां प्रेडिसेसर ऑडिटर जो है वो कोई डिफरेंट था और इस दफा ऑडिटर जो है वो डिफरेंट है। हेंस आप बताते हैं कि ये जो करस्पॉन्डिंग नंबर का जो ओपिनियन वहां हुआ है पिछले साल के फाइनेंशियल में वो कोई नहीं, ये कॉमनली यूज होता है और ये अदर मैटर पैराग्राफ के अंदर आना है। अदरवाइज जो है वो मैं भी आपको एनकरेज नहीं करूंगा कि इसका ज्यादा वाइड स्प्रेड यूज किया जाए। नाउ शुरू में मैंने आइजाज लिस्ट किए थे एंड उसके अंदर क्रॉसपॉन्डिंग फिगर्स जो आइजाज 710 है, that is about comparative information. Comparative information जो है वो corresponding figures in comparative financial statement के context में है. These are two separate contexts. In Pakistan we use the corresponding figure methodology. So I'll restrict myself to हम statutory financial statements के context में बात कर रहे हैं where the concept is of corresponding figures. So we will discuss only the corresponding figure related aspects. Now, in the corresponding figures matter, there could be a situation. यहाँ basically मैंने तीन situations जो है वो explain की है. So the first such situation could be where prior year financial statements के ऊपर जो audit opinion था that included a qualified adverse or a disclaimer opinion. हो सकता है ना? So पिछले साल जो है वो audit report modified थी एंड अब इस साल की सिचुएशन में अब नया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ गए हुए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? तो वी नीड टू सी वेदर सच मॉडिफिकेशन व्हिच द मैटर व्हिच gave rise to the modification has that been resolved? क्या इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या वो मैटर अभी भी एग्जिस्ट करता है? सो अगर वो अभी भी एग्जिस्ट करता है, सो देन वी हैव टू मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन ऑफ द करंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट. अगर वो रिजॉल्व हो गया हुआ है देन हमें इसको पिछले को इस दफा दोबारा ऑडिट ओपिनियन में रिपीट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा जो मैटर है कि जो मटेरियल एग्जिस्ट करती थी प्रीवियस प्रायर ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन वो ओपिनियन आपने यानी वो उसका पता जो है वो करंट ईयर में पता चला कि जो प्रीवियस जो करस्पॉन्डिंग नंबर्स थे वो मटेरियली मिस्टेकेड थे. और ये हो जाता है मैनी अ टाइम्स. कोई नया फैक्ट, कोई हमें ऐसी चीज पता चलती है जो शुड हैव बीन नोन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट रह गया, एग्जिस्ट किया, लेकिन उस वक्त ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाई या उसको इम्पैक्ट नहीं आया. So what we need to see is if we have identified in the current year that there existed material misstatement in the prior period financial statements, what we need to see is whether financial statements have been restated. अगर financial statements have been properly restated, then हमें कोई चीज देने की as such जरूरत नहीं है. But अगर financial statements are not properly restated, उन्होंने मैनेजमेंट ने कंपनी ने रीस्टेट नहीं किया है, then we express a qualified or adverse opinion on the current year financial statements के जी इसके अंदर ये impact है. Prior period financial statements जहां ये audited by a predecessor auditor है और यानी उसको अगर आपने ऑडिट नहीं किया तो मैं पहले अदर मैटर पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ. बट ये सिचुएशन भी आती है कि इस दफा ऑडिटर भी चेंज हो गया हुआ है. तो अगर ऑडिटर भी चेंज हो गया हुआ है और मटेरियल स्टेटमेंट क्रॉसपॉन्डिंग फिगर्स के अंदर मौजूद थी, तो अब वो फिर यहाँ आई एक्सप्लेन ऑन दिस स्लाइड अगर तो आइडेंटिफाई हुई है और वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अमेंड हो गई भी है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह से नहीं होता. वो जब तक नया ऑडिटर आता है, साल गुजर चुका हुआ होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो प्रैक्टिकली री इशू नहीं हो रही होती है. सो कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जो है वो रीस्टेट होती है. सो अगर कॉरस्पॉन्डिंग फिगर्स जो है वो प्रॉपरली रीस्टेट हुई है, ऑडिटर जो है वो समटाइम नया आ जाता है, तो एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर जो है वो आप मेंशन कर सकते हैं. बट जो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट है वो मे के साथ है. ऑडिटर्स रिपोर्ट मे इंक्लूड एन एम्फेसिस ऑफ मैटर. इट इज नॉट विद शेल
सो इट इज ऑडिटर जजमेंट कि जी वो अगर कॉस्पॉन्डिंग फिगर्स प्रॉपरली रीस्टेट हो भी गई हैं करंट ईयर में, वो मटीरियल स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो गई हुई है कॉस्पॉन्डिंग फिगर में, बट जो नया ऑडिटर है, इनकमिंग ऑडिटर जो है, जो अब जो नए साल का ऑडिटर है, वो अपने एम्फेसिस ऑफ मैटर के अंदर डिस्क्राइब कर सकता है सर्कमस्टांसेस, बट दिस इज with the word may, it is not with shall. Now ISO 720, 720 is about other information. Other information हम commonly understand भी करते हैं, but just मैं quickly read कर देता हूँ कि financial or other non-financial information other than financial statement and auditor's report thereon included in an entity's annual report. So practically speaking, जो एक annual report publish हो रही होती है, उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलावा अगर कोई एनालिसिस है, 6 ईयर टैक्स को बता रहे होते हैं, डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है, चेयरमैन्स रिव्यू होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई, सो कोई भी अदर देन एक बुकलेट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अलावा अगर कोई चीज है तो दैट इज कंसिडर्ड, दैट इज डिफाइंड एज अदर इंफॉर्मेशन। ठीक है, सो अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ ये 4 इंडिविजुअल बताए हुए हैं के अंदर कि मैनेजमेंट रिपोर्ट, मैनेजमेंट कमेंट्री, ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल रिव्यू किसी भी तौर के ऊपर किसी भी हेडिंग में है, बट वो पार्ट ऑफ द एनुअल रिपोर्ट है, तो वो हमने इसको अदर इंफॉर्मेशन के अंदर कैटेगराइज करना है। चेयरमैन की भी कई दफा रिपोर्ट सेपरेट होती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई एडिशनल स्टेटमेंट आ रही होती है, इंटरनल कंट्रोल एंड रिपोर्ट आ रही होती है। सो what we need to see is कि whether such other information कोई ऐसी चीज तो नहीं कर रही जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट से डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट चीज प्रोड्यूस कर रही है कि जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट है और आप पूरी रीजनिंग कर रहे हैं लॉस, तो एक बिल्कुल डिफरेंट बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कंटीजेंसी का पोजीशन दी है और बैलेंस रिपोर्ट के अंदर आप कह रहे हैं केस आ जाएंगे। सो कोई ऐसी चीज जो कि कॉन्ट्राडिक्टरी टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, उसको हमने ख्याल रखना है कि वो अदर इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कोई डिफरेंट चीज ना कर रही हो। सो ऑडिटर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने वो अदर इंफॉर्मेशन को रीड करना है और रीड करके अपनी ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर उसको अकॉर्डिंगली जो प्रिस्क्राइब्ड जिस तरीके से है, और जो प्रिस्क्राइब्ड है वो जो ऑडिटर रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन है उसमें ISO 720 को रेफर कर दिया गया है। तो और जो 720 को जब हम जाके देखते हैं तो अभी मैं फर्दर सब्सिक्वेंट स्लाइड में इसको कवर करता हूँ, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड इज कि इसका प्रोसीजर क्या है। कि अगर पहले हमें ये देखना है कि अदर इंफॉर्मेशन अपीयर्स टू बी मटीरियली मिसस्टेटेड, आप अदर ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे, क्या वाकई ऐसा फैक्ट है कि जी वो क्या कहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो मिसस्टेट नहीं हो रही है अगर अदर इंफॉर्मेशन में ऐसी चीज आ गई हुई है। सो फाइनली अगर आपने ये डिसाइड किया, you know, based on your work, you have concluded that other information जो है वो misstated है. First such thing is that you need to request to the management कि इस information को correct करें. Again, उसके अंदर वो सारे options आ जाते हैं, withdrawal के, modified opinion के, ये सारे जो हैं वो आप दोस्त चार्ज गवर्नेंस का मैंने प्रोसेस बता दिया हुआ है। अगर उसके बावजूद भी ना हो तो फिर हम जो है वो अपनी जो है वो क्वालिफिकेशन और वो सब देखनी है। So that is एक normal process है। I just wanted to emphasize कि ये हम इसको देख लें। Now I mentioned कि जो other information का जो ऑडिटर रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि ऑडिटर्स रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन ने तो ISO 720 को रेफर कर दिया हुआ है। When we come to the 720, उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। I think there are 7 different type of situations जो अदर इंफॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में हो सकती है। जब हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जिस स्टेज के ऊपर, जिस टाइम के ऊपर वी आर अबाउट टू साइन एन ऑडिट रिपोर्ट, प्रैक्टिकली जो है वो जो पूरी अदर इंफॉर्मेशन है वो आपको हैंड ओवर नहीं हुई भी होती, वो आपको मालूम नहीं होती, बट ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है जहां नहीं होती। तो उस सिचुएशन में आपने क्या करना है, वेयर फुल इंफॉर्मेशन इज नॉट बीन प्रोवाइडेड। कई दफा जो मैनेजमेंट है वो इंश्योर करती है कि नहीं,
अगर आपने इसमें लिख दिया कि हमें ये इंफॉर्मेशन मिली है और ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है अपनी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, तो मैनी मैनेजमेंट जो है वो दे टेक इट नेगेटिवली. सो व्हाट दे ट्राई एंड इंश्योर इज कि वो आपको पूरी अदर इंफॉर्मेशन जो है उसकी अवेलेबिलिटी कर देते हैं कि जी दिस इज द अदर इंफॉर्मेशन दैट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैव अप्रूव्ड. सो व्हेन यू आर साइनिंग द ओपिनियन, आप उसके अंदर देख लेते हैं कि जी कोई ऐसी चीज तो नहीं है जो कि contradictory है from the financial statement and the understanding of the auditor on the financial statement. So there are 7 such situations. Most commonly, as I said, कि वो आपको पूरी प्रोवाइड कर देते हैं. So accordingly आप देखने के बाद बता देते हैं कि कोई इसमें डिफरेंस नहीं है जो इन्फॉर्मेशन आपको मिली. लेकिन अगर कोई इंफॉर्मेशन जो है वो आपको नहीं मिली है या आपको कोई एक रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की रिपोर्ट मिल गई है, चेयरमैन का स्टेटमेंट नहीं मिला है, तो ये आप फिर मेंशन कर सकते हैं कि आपको क्या मिला है और जो मिला है उसके ऊपर क्या है. तो आइजा 720 के अंदर देयर आर 7 सच सिचुएशंस. आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से उसको जाके वहां देख लें. मैंने वैसे यहाँ ये एज एन एग्जांपल जो है वो सारी लिस्ट कर दी है, बट यू नीड टू फॉलो गिवन इन दी आइजा 720. आप अपने पर्टिकुलर केस के वहां से जरूर मेंशन देख लें और उसी के मुताबिक अपनी रिपोर्ट को उसका कंटेंट जो है वो करें. अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा कॉमनली मेरे से किया जाता है कि जो अदर इंफॉर्मेशन है फॉर लिस्टेड कंपनीज, वो तो क्लियर है कि एक पूरी एनुअल रिपोर्ट होगी और उस एनुअल रिपोर्ट के अंदर जो है वो पूरा जितने भी टाइप ऑफ मैंने डायरेक्टर्स की रिपोर्ट, चेयरमैन स्टेटमेंट और कोई कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की कोई स्टेटमेंट उन्होंने दी हुई है, वो तो होता है. लेकिन फॉर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अदर इंफॉर्मेशन क्या कॉन्स्टिट्यूट करती है? तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है एज पर द लॉ, हर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए अगर मैं वो स्मॉल साइज से माइक्रो एंटिटीज है उनको अगर छोड़ दें, प्रीडोमिनेटली जो अदर देन लिस्टेड कंपनीज है और माइक्रो को छोड़ दें, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए डायरेक्टर्स रिपोर्ट इज मैंडेटेड. So since director's report is mandated, that forms the other information. So private limited companies case आप उसको आइडेंटिफाई करें कि हमने डायरेक्टर्स रिपोर्ट को रीड कर लिया हुआ है. ये बिल्कुल कॉमनली जो है वो यूज भी होता है, बट आई जस्ट वांटेड टू आइडेंटिफाई एंड हाईलाइट यू के फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अदर इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट. Now, at the start of the presentation, I mentioned about audit documentation and linking it to the auditor report. What is that? It is required by the standards that we have to timely complete and assemble the audit file. इसकी जो टाइमली कंप्लीशन और असेंबली है, उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि यू मस्ट नॉट आर्काइव इट आफ्टर 60 days. यानी उसकी जो कंप्लीशन है, उसकी जो असेंबलिंग है, वो ऑडिटर रिपोर्ट से 60 दिन से ज्यादा नहीं होनी चाहिए. राइट? 60 days इज द टाइम लिमिट. सो जो भी ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट है उसके 60 days के अंदर आपने उसको आर्काइव करना है. आर्काइविंग इज अ कंप्लीट प्रोसेस. दोज हु यूज सॉफ्टवेयर, तो ऑडिट सॉफ्टवेयर वो उसको कवर कर लेता है. यानी ऑडिट सॉफ्टवेयर जो है वो आर्काइव कर देता है 60 days के बाद ऑटोमेटिकली, या आप थ्रू अपना एक स्पेसिफिक मैनुअल एक्सरसाइज के थ्रू, तो सॉफ्ट फॉर्म के अंदर तो सिस्टम कर देता है. बट देयर आर हार्ड फाइल्स एज वेल. तो अगर हार्ड फाइल्स मेंटेन हो रही है, you need to take an evidence that audit file was archived. That means the completion and assembling of the final audit file has been done within 60 days. Within 60 days means auditor report के बाद. So that is the significance and link with the auditor report कि वो documentation 60 दिन के अंदर हमने उसको करना है. इसमें भी एक बड़ी कंफ्यूजन है, बहुत लोग सवाल करते हैं, एंड दैट इज कि सब्सिक्वेंट टू द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट भी बहुत सारा एविडेंस जो है वो असेंबल होता है. लेट मी मेक इट वेरी वेरी क्लियर दैट द कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट
the completion of the audit is when the audit report is signed. All evidence supporting the audited period needs to be obtained, needs to be finalized before the audit report is signed. So ये कहीं नहीं है कि ऑडिट रिपोर्ट कर दे और 60 दिन तक भी जो है कुछ वेरिफिकेशन करते रहे और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है वो आप करते रहे. इट इज जस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क कि कहीं आपने कोई ऐसा पार्टनर का कमेंट लिखा हुआ था उसको डिलीट करना है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड चीज जो है उसको एक फाइनल गो थ्रू कर लें, रिव्यू कर लें. ये असेंबलिंग जो है हो सकता है कोई एक फाइल किसी एक ने ईमेल पे किसी के पास वो एविडेंस जो है वो ऑडिट टीम में ही है, वो एक जगह आपने असेंबल करना है. दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. इट इज नॉट दैट न्यू एविडेंस और न्यू वेरिफिकेशन चले 60 दिन तो है ये करते रहेंगे. दैट इज अ नॉन कंप्लायंस एंड नाउ even the audit oversight board is asking for the archiving information as well. So इसके ऊपर बहुत इश्यूज आते हैं. ये प्रैक्टिकल बात है. थ्योरेटिकली तो हम सब कहते हैं कि हाँ जी सब हो गया और 60 दिन में हमने कर दिया, बट टू कीप अ प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ the archiving to be done within the 60 days period that I mentioned, इसको नोट करना बहुत ये कॉमन प्रैक्टिस आ सकती है. लोग शायद कर भी रहे हो, आई डोंट नो, कि वो फाइल की कर दिया, बाद में कोई इशू आया तो फिर उसके बाद जाकर उसमें ऐड कर दिया. नो सर, दिस इज अ वेरी वेरी सेंसिटिव सिचुएशन जहां आपको 60 डेज के बाद कोई नया एविडेंस जो है वो क्रिएट नहीं करना. That is what the requirement is. And also once you have assembled the audit file, so again iska link hai ke for how long you need to keep that audit documentation with the firm. So the period prescribed by जो standard है उसने कहा है 230 ने कि not less than 5 years. But in Pakistan's case, when we are doing audit under Companies Act, कंपनीज एक्ट के अंदर हम उसको 6 years देते हैं. एंड द रीजन फॉर दैट इज देयर इज अ सेक्शन which requires the registrar or gives authority to the registrar to ask from the auditors information which is 6 years old information. So just to cover that part, auditing standard जो कहता है कि no shorter than 5 years. However, under the Companies Act, because it is the authority, it is with the registrar who can ask for information for up to a 6 years period. And the Companies Act, when we issue our engagement letters, we mention that the audit documentation will be maintained from the date of the auditor's report for the next 6 years. Other than that, अगर किसी और लॉ के अंदर आप ये कर रहे हैं तो वो 5 साल से कम नहीं होना है from the date of the auditor's report. So that is about the audit conclusion and reporting. I'll be happy to take questions. Thank you.